This is what a scooter should be. Clean, classic, refined. A bold electric statement. Expressed in timeless design. Transcending generations. Good afternoon, everybody. On behalf of Bajaj Auto, I'm delighted to invite all of you to this very special event. I must start by thanking everybody for having some patience as we're running a little behind schedule. I also want to extend that same thanks to everybody on the web who's watching this live webcast. We've started a little late, but believe me, we will keep you engaged for the next hour or two. As I said, it's a very special day for Bajaj Auto. We have in the midst of us some extremely important dignitaries. I'd like to welcome them all. We have the Honorable Minister for Road Transport and Highways, Mr. Nitin Gadkari. We have the CEO of Niti Aayog, Mr. Amitabh Kant. We have Mr. Piyush Pandey, who is the Worldwide Chief Creative Officer for Ogilvy. We have with us Mr. Rajiv Bajaj, who's the Managing Director for Bajaj Auto. And we have, from the senior leadership team, we have our Executive Director, Mr. Rakesh Sharma. We have Mr. Joseph, who's our Chief Technology Officer, and Mr. Eric Vaz, who's the President of the Urbanite Division. A big thank you, finally, to all our friends in the media who have graced this occasion. It's a very special day for us. And without any further ado, I'd now like to call upon Mr. Rajiv Bajaj to please start the event. Thank you, Narayan, and good afternoon, everyone. Sincere apologies on my behalf as well, and let me say it's not a little delay, it's a big delay, but although I have a bad voice this morning, I will do my best to rescue the event, and just bear with me. When we first announced that we were meeting here for this Hamara Kal event, I must say that I was quite surprised to hear how much enthusiasm it had generated. Everybody had guessed it was to do with electric vehicles, and that surprised me even more, because it seems like in our country, if not in the world, there's a new electric vehicle launched every day. I watch with amazement how people who have spent their whole lives making batteries or motors or just plain steel suddenly want to put a coat on their button thinking they can make electric vehicles tomorrow, as if it happens at the click of their fingers. But at least they are manufacturers. I'm even more amazed to see how sometimes people who have done nothing but imported air conditioners and refrigerators and mobile phones from China suddenly want to revolutionize our roads by making electric vehicles out of thin air. And I've been in meetings where I've had occasion to be even more amazed, where failed two-wheeler manufacturers who couldn't keep the show going with their IC engines want to change the world with electric vehicles. And then there are some existing two-wheeler makers who, when it comes to making electric vehicles, promptly go and invest in a South-based company, as if it's somebody else's job to make an electric vehicle for them. So when all these people talk about Hamara Kal, as in Hamara future, I prefer, of course, to talk about our future, but I prefer to start with our past, because we are not a battery or a steel maker. We are not a failed two-wheeler company. And as a two-wheeler company that will make electric vehicles, we are not a venture capitalist who will fund someone else. We are engineers who do our own work.
We are a company with a very rich past, a strong track record, a rich legacy. And I think it is the credibility of this rich past that gives us a solid foundation to make a foray into the future. So I want to dwell for a few minutes on Hamara Kal as in our yesterday. Our yesterday starts with the golden period in the history of Bajaj of 30 years, from the 60s to the 80s. When I was in school, that's why it was probably the golden period of Bajaj. My father was very much in charge. And it is a period in the time of Bajaj that is best known by the sentiment of Hamara Bajaj. So I want to share with you now the first AV, giving you glimpses from the golden period of Hamara Bajaj. Can we have the AV, please? ये ज़मीं ये आसमां, हाँ ये ज़मीं ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज Thank you. Thank you. Very kind. Yeah, even for us at Bajaj, I mean, this original expression of Hamara Bajaj, the song of the nation, still runs very deep with us. Friends, if that was the golden period of 30 years from the 60s to the 80s, we think the next 30 years, from the 90s up until now, has been almost a platinum period for us. And let me tell you why. In the early 90s, our chairman said to us that he wanted Bajaj to be not just a dominant company in India, he wanted us to be a global company. This was 30 years before we heard of Make in India. And he said that to his mind, being a global company meant that we must export at least 20% of our production. Now, some of you, like Adil, you know our chairman. When he says something, it is not a direction, it is a diktat. So we said to ourselves that if this is what we have to achieve, and he's not going to give us too much time to achieve this, then the best strategy is what we call as the strategy of narrowing our focus. What that means, quite simply,
is that if a manufacturer has to take his product or his service from one market to more markets and indeed to many markets across the world, it is indispensable that he must simultaneously narrow the focus of the product portfolio that he offers. In other words, he has to become more and more of a specialist. It doesn't matter whether he's a business person, a sports person, a music artist, a chef. If you want to be the best in the world at something, you got to put everything into one thing. So this is what we call as the strategy of narrow your focus. And that is why I say to people, when they say to me that I am the person responsible for Bajaj stopping the scooter, I tell them the fact is, it is the chairman that is responsible, because he said, go to global markets, and it was a corollary to that, that we had to become a specialist in something. And we decided to become a specialist in motorcycles. Looking back, we ask ourselves, did our strategy work? We think it did. As you know, last year we exported not 20%, not 30% of our production. We exported as much as 40% of our production. Most Indian auto companies or engineering companies struggle to get their exports into two digits. 40% of our production was 2 million vehicles out of 5 million vehicles last year, motorcycles and three-wheelers included. This export was to over 70 countries, I believe close to 79, ranging from the export of Pulsar and Dominar and the KTMs, and very soon we hope the Huskies, and very soon into the future the Triumphs, to the markets of US, Europe and Japan. And at the other end of the spectrum, perhaps you may not be aware that across the continent of Africa, the Bajaj Boxer represents 1 out of 3 motorcycles that is sold every day across the continent of Africa. Yeah? I think this is something that we must all be proud of as proud Indians. So that is the kind of success that we were able to achieve. In over 80% of the markets in which we participate, with motorcycles and three-wheelers, we are either number 1 or number 2 as a brand in that market. To mark this, to celebrate this achievement, Mr. Kant was with us in January when we launched the campaign of the world's favorite Indian, and I'd like to share that AV with you again. Can we have the AV, please? दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में करोड़ों लोग हमारे बढ़ते परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, तभी तो हम हैं द वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन। Friends, the question is, after this, where do we go next? Well, what we enjoy doing at Bajaj is creating new things for a new and a better future. So now we come to Hamara Kal as our future. Mark Twain said, as only Mark Twain can, never let your schooling
interfere with your education. And so we say to ourselves at Bajaj, we must never let our business interfere with our entrepreneurship. It's all very well to be a business person. It's very nice to scale up something, to make it bigger, to make more money, to earn some name and fame. But what our leadership team really enjoys doing with great passion at Bajaj is not just scaling up what is existing, but always creating something that is new, something that is meaningful for the future. Now, in this context, sometimes when it comes to creating new things, there is an anxiety or a pushback that, will it work? In the context of electric vehicles, people say, are customers ready? Where is the charging infrastructure? Is it viable? Is it practical? And I want to share with you a quote of Jack Ma, and you all know who Jack Ma is, which I would like to suggest is the most important thing that I want to say today. And in the context of the future, this is what Jack Ma said. He said, don't wait for the environment to be ready. Don't wait for the policy to be ready. Because when everything is ready, there is no opportunity for you. If you are not first to market, or at worst, second to market, you lose the market forever. It is with this attitude that we have decided to move into our cull with electric vehicles, and the first of which we would love to share with you today. Now, as you know, the famous song, I get by with a little help from my friends. So I also have three very good friends, if I may call them that, here today with me. They are all very senior to me, much older than me, but I am taking the liberty of calling them my friends. First is Mr. Piyush Pandey. Piyush has been my friend, philosopher, guide in marketing, strategy, advertising, and communication for over 20 years. I tell you a little anecdote about him. We first met when Bajaj created the Pulsar in 2001. And as soon as I met him, I told him what the script of the ad should be like. I said, Mr. Pandey, ad Pulsar ka aisa hona chahiye. And he said to me, Kal Bombay aa jana, I will show you the motorcycle which I have made. So that put me firmly in my place. After that, I have stayed with making motorcycles, and he has stayed with making advertisements. But all the work that you see today is thanks to him. In fact, you will hear his voiceover in one of the AVs that we will share with you later. And of course, a big thanks to Team O&M, Sukesh and Rajesh and everyone else who's here. Thank you for all your friendship and support over time. My friend and a great supporter of Bajaj has been Mr. Kant, the CEO of Niti Aayog. In our effort to develop our company, I am constantly trying to align myself with his policy because, unfortunately, even though I say he's my friend, but he never bends his policy to help my company. I have to keep aligning to his policy. Okay. And as is well known, and I will share this candidly, I have had only one disagreement with him in the 3 odd years that I have known him and interacted with him. And that is when there was a policy proposed for a very rapid conversion to 100% electric vehicles by 23 and 25. Well, thankfully that prospect seems to have faded, but sir, you have won, and I'll tell you why. Somebody said, everything is created first in the mind and then in reality. So the truth is that after Mr. Kant sent that Brahmastra in our direction, I can tell you one thing, 50% of my thinking time is only on electric vehicles since 21st of June, Friday, when I first heard of this proposed policy. So sir, if 50% time in my mind is electric vehicle, in reality it will also be 50% soon. So once again you have won, sir. And that is why we are delighted you are here. Thank you very much for all your support over the years. When I heard about this policy for electric vehicles, you know, there is a saying, when the going gets tough, the tough go to the government. So when I heard this, I went to my, if I may say so, best friend in government,
our chief guest, Shri Nitin Gadkari. I said, sir, bacha lo. So first, he gave me lunch. You know, there is a saying, fattening the lamb for slaughter. So first he gave me lunch, and then he said two things which I will take the liberty of sharing. बाद में शायद sir सुनाएंगे मेरे को, but anyway I will say it. I've inherited my father's genes, so I talk more than I should. So he said to me, first he said, don't worry, ऐसा कुछ होने नहीं देंगे हम, मतलब industry will be supported. And then with a smile he said that actually मैंने ही उनको बोला है तुम्हारे गर्दन पे तलवार रखने के लिए. These were his exact words. He cannot deny it. तो सर, I want to say to you, आज जब आप देखोगे कि हमने क्या काम किया है, तो शायद आपको भी महसूस होगा कि जो चेतक चलाते हैं और चेतक बनाते हैं, उनकी गर्दन हमेशा सलामत रहती है सर. So, thank you very much, all of you, for being with us on this very, very important occasion. And before I close, I want to say one final thing. On Wednesday, the 25th of September, I visited our Chakan plant where we had started production for our electric vehicle that we will share with you today. And although I had obviously been very closely associated with both the product and the plant, even I was not prepared for what I saw. Because I have also grown up and I am conditioned by an era where production is long lines, big sheds, lot of noise, lot of people, lot of activity, lot of hangama. But what I saw there, it just blew my mind. That is an experience that I came back and said to myself, is a magical experience. And I think it is best that I share it with you through another AV. So can we have that AV, please? ये फैक्ट्री लगती ही नहीं है. सब कुछ इतना शांत है यहाँ, विश्वास ही नहीं होता. इस फैक्ट्री में 80% औरतें काम करती हैं और हम सब मिलकर एक बहुत ही आधुनिक स्कूटर बना रहे हैं. ये असली प्रगति है. Everything here is high-tech. I've been making bikes for 30 years. But this is something different. It's magical. मेरा एक छोटा बेटा है. यहाँ जो मैं गाड़ी बना रही हूँ, उससे हमारा कल बेहतर बनेगा. It really does feel like magic, and if you thought that was surreal, I welcome you all when you can to come and see the plant for yourself. So friends, we think that in this product and in this plant that makes the product, we have truly created the Make in India for Hamara Kal, for the future. And who better to say something more about this than Mr. Amitabh Kant, well known as the architect of Make in India. Sir, please
come and share your thoughts with us on this occasion. Thank you. The Honorable Minister, Mr. Gadkari, my friend Mr. Piyush Pandey, the driver of this great company, Mr. Rajiv Bajaj, distinguished guests, ladies and gentlemen. First of all, let me say that I've been a long-term and a long-time admirer of the Bajaj. The first scooter that I ever drove in my life was a Bajaj scooter. The first motorcycle that I ever drove in my life was a Bajaj motorcycle. And the one industrialist that I've always admired for his huge focus on manufacturing in India was Rajiv's father, Mr. Rahul Bajaj, who's a great friend of mine personally, but he's a tremendous leader in many, many ways. And so I'm really delighted and honored to be here. I'm a great believer in the fact that the future will be the shared, connected, and an EV world. There's no doubt about it. We are in the midst of the biggest disruption in the mobility world that is taking place across the world. And whether we like it or not, this disruption will take place. The world will move away from combustion engine from 2,000 parts to 20-odd parts. And the cost of battery will fall radically from about $176. It has fallen from close to $1,100 kilowatt per hour to 176 kilowatt per hour. But in 3 years' time, mark my word, it will come down to 75 kilowatt per dollars per kilowatt hour. And at that point, the combustion car will be on par with the electric vehicles. And therefore, the cost of electric vehicle will be, the total cost of ownership will be low, the electric vehicle will be low, and the consumer will go for it. And therefore, quite often in India, we get into the sunset areas of industry. We lost out on the solar cells. We lost out on the mobile manufacturing. We lost out on telecom equipments. And all these areas, we've become major importing nations. We've also lost out on the four-wheeler mobility world. China has taken on that. And therefore, Chancellor Merkel of Germany told Audi, told Mercedes, told BMW that the dominant form of manufacturing in Germany will be electric. Will be electric, otherwise China will eat up the German automobile industry. There's no doubt in my mind. And therefore, my belief and my conviction is that India must be the champion of two-wheeler and three-wheeler world. Not for the domestic market, but for the world. This is a massive opportunity for India. And if we do not seize this opportunity, we lose out on this. And that's why we told the automobile industry that we must go in all out and become global champions for two-wheelers and three-wheelers. We called the industry and we said we must lay out a clear roadmap. And we said not 1 year, 2 years, 5 years, 6 years we'll give you, but 6 years down the line, you must become the dominant form of manufacturing for the electrical manufacturing of two-wheelers and three-wheelers. Led by Mr. Rajiv Bajaj and Mr. Venu Srinivasan, they protested, they objected, and they kind of said that this policy is wrong, and they said that we will get a study done. We will commission BCG and get a study done that what should be the roadmap. I've always been a great believer in working with the private sector. I believe in private-public partnerships, so I said we will go by your study. Please do that study. We've not got the study from them till date.
But I'm delighted that instead of the study, Mr. Rajiv Bajaj has delivered us the electric vehicle. And that is the hallmark of a great champion, that he does not believe in the theoretical world, but he believes in delivering the product. You know, when Rajiv Bajaj makes a two-wheeler bike, which is electric, he believes in size and scale. He believes in technology. He believes in cutting-edge work. And therefore, once he has delivered a two-wheeler electric bike, I can tell you that this bike will capture the entire global market. I have no doubt that by his sheer ability, like he's done in the scooter world, he will produce a product which will be the best product in the world, which will have the best cutting-edge technology, and which will catch the imagination of the consumers across the world. And therefore, I have the greatest admiration for his entrepreneurship, for his vision, for his dynamism, and for his ability to so quickly produce a world-class product which will be launched by the Honorable Minister. I'm truly delighted that the Honorable Minister is here because he's truly progressive. He's one of the most progressive people who drives unique technological breakthroughs from biofuels to ethanol to many other things. And I'm sure he's truly a champion of electrical because he realizes that the future will be disrupted. And therefore, I'm truly honored to be here on this occasion, and I can assure you that in the world of sharing connected and electrical vehicles, what Rajiv Bajaj and what the Bajaj bike will deliver, nobody else in the world will be able to deliver. And this automobile and this two-wheeler will penetrate all markets of the world and the hearts and minds of consumers all over the world. And we, on part of government, will fully act as facilitators and catalysts to enable this great imagination and vision of his to be backed, his perspective of Make in India to be backed by all government policies. So congratulations. I wish this automobile all the best, and I wish this great motorcycle, this electric motorcycle, all success, and I'm sure that it'll penetrate all consumers and their hearts and minds. My all good wishes to the Bajaj family. Thank you, Mr. Kant, for the wonderful, inspiring words. So we're now here for a very momentous occasion, and now for what we've all been waiting for, which is the unveil of our new product that Mr. Bajaj spoke about. So could I please have the unveil button, please? This is what a scooter should be. Clean, classic, refined. A bold electric statement. Expressed in timeless design. Transcending generations.
request everybody, all the camera people, to please move a little back. There are a lot of our guests at the back who are not able to see anything. You'll have ample opportunity for taking photographs. So can I please request all of you to please move back? Folks. Yeah. Okay. So moving on, may I now call on Mr. Rajiv Bajaj, Honorable Minister Mr. Nitin Gadkari, and Mr. Amitabh Kant to please come up on stage. Request Honorable Minister Mr. Nitin Gadkari to please share a few words with us. Thank you. अमिताभ कांत जी, राजीव जी और उपस्थित सभी, पीयूष जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत अच्छी सुंदर आज राजीव जी ने लॉन्च की है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और इस उनके उपक्रम को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा ये विश्वास देता हूं। अमिताभ जी ने अभी स्टोरी बताई है कि जब से अमिताभ जी भी सीओ बने और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री बना, तब से लगातार हम इस बात का जिक्र करते रहे और एक ऑटोमोबाइल के बहुत बड़े प्रोग्राम में मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक होना ही है, आपको करना ही पड़ेगा, और ये भी कहा था कि जो हमारे साथ आएंगे उनके साथ, जो नहीं आएंगे उनके बावजूद, और जो विरोध करेंगे उसके बावजूद ये डंके के चोट पर हम करने ही वाले हैं, आपको आना ही पड़ेगा और नहीं आएंगे तो घसीटते हुए ले जाएंगे, ऐसा मैंने कहा था। बाद में काफ़ी रिएक्शन आई उसकी और अमिताभ जी कह रहे ये बिल्कुल सही है। दो अनुभव है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, एक BS4 से BS6 जाने के लिए पूरे इंडस्ट्री ने इतना विरोध किया और आखिरी में मैंने कहा आप जो करना है कर लो, ये हमने तय किया है, देश को प्रदूषण से बचाना है और हम करेंगे। और आज वो कहते हैं कि आपने इतना जोर लगाया इसलिए अच्छा हो गया। और जब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात आई, बायोफ्यूल की बात आई
और मैं आग्रह करता रहा, तब भी अमिताभ जी और मैं कहते रहे, तो लोगों में बहुत ही बड़े प्रमाण पर आज उन्होंने बताया कि बहुत अंदरेज था। और काफ़ी लोग कह रहे थे ये ऐसे कैसे होगा, आप कह रहे हो ये इतने जल्दी कैसे हो पाएगा, इसके लिए समय लगेगा। तो मैंने उनको एक बार, मुझे याद है राजीव जी को कहा था कि तैरने के पहले कोई आदमी खुद होके तैरता नहीं शुरू, उसको जब तक ढकेलना पड़ता है तभी वो तैरना सीखता है। आप तैरने की क्षमता रखते हो, आप में कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, पर ज़बरदस्ती से किसी को तो भी आपको ढकेलना पड़ेगा, उसके सिवा आप तैरना नहीं सीखोगे। और मैंने उनको यही कहा कि आज ये जो बातें हम कह रहे, ताकि आप जल्दी इसके तरफ डाइवर्ट होकर आपके रिसर्च के साथ इसके अल्टरनेटिव को लेकर आए। और मुझे खुशी है कि आज हमारा जो इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक जो सपना था, वो लगभग अभी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि ये इसके लिए टाइमलाइन की चर्चा मीडिया करती है, पर टाइमलाइन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक एज ए फ्यूल इतना चीप है, पोल्यूशन फ्री है, और इसकी कॉस्ट भी, अब मुझे पता नहीं आगे क्या कॉस्ट होगी, पर जब नंबर बढ़ेगा तो कॉस्ट पेट्रोल व्हीकल की तुलना में अच्छी रहेगी। तो ये नेचुरली लोग लाइन लगा कर लेने वाले हैं। और इसलिए अभी जब आपने बताया, तो मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे स्कूटर लेनी थी, तब वो 5-5 साल नहीं मिलती थी, तो मैंने 4000 रुपये ऑन देकर आपकी स्कूटर खरीदी की थी। हाँ, फादर पर तब मैं वो हमारे एक पाटनी ऑटोमोबाइल से स्कूटर ली, तो उसके रंग थे, तो मैंने कहा मुझे चॉइस दूसरे कलर का है, तो उसने कहा साहब यही रंग है, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। तो मैंने कहा था देखो पाटनी जी, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम ट्रक पर स्कूटर लेके मार्केटिंग करने के लिए घूमोगे। तो मैं मजाक में, मेरे मित्र थे, पर कंपटीशन बढ़ी, क्वालिटी अच्छी हुई, और बजाज ने भी इतनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन की कि लोगों में उसकी डिमांड बढ़ती गई। और मैं आपको आज विश्वास बताता हूँ, विश्वास के साथ बता रहा हूँ, आप जो पेट्रोल का जो 40% आपके व्हीकल आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, मैं आपको बताऊंगा इसका पेट्रोल से भी इसका एक्सपोर्ट 10-15% ज़्यादा रहेगा, इतना एक्सपोर्ट आपको मिलेगा। और ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये लिथियम आयन बैटरी का भी प्रॉब्लम, नंबर बढ़ेगा, इंडिया में बनेगी, कीमत कम होगी, जो अमिताभ कांत ने कहा। मोबाइल फ़ोन में देखिए, जब मोबाइल फ़ोन आया तो कीमत कितनी थी, आज कितनी है। मोर कंपटीशन, गुड प्राइस टू कंज्यूमर। तो ये नेचुरली सब कम होते जाने वाला है, पर इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं करने की आवश्यकता थी। और हमारे देश का इंपोर्ट बिल 7 लाख करोड़ का हमारा फ्यूल का इंपोर्ट है, और ऊपर से पोल्यूशन है, और उसके साथ देश के इकोनॉमी से इतना बड़ा पैसा बाहर जाता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस, यही हमारी नीति रही। और आज मुझे खुशी है कि सब लोग इस दृष्टि से काम पे लगे हैं, और इसीलिए इतना अच्छा प्रोडक्ट आज लॉन्च हुआ है। और मैं विश्वास के साथ आपको बताता हूँ, अभी हमारी स्क्रैपिंग पॉलिसी भी जल्दी आ जाएगी, और हम 3 बातों पर कोशिश कर रहे हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने में सरकार क्या कर सकती है। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना, कैपिटल कॉस्ट कम करना, और पावर कॉस्ट कम करना। वैसे मैं एमएसएमई का भी मंत्री हूँ, इंडस्ट्री के भी एंसेलरीज और बाकी बातों के बारे में भी मैं जब सोचता हूँ, तो धीरे धीरे ये तीनों कॉस्ट कम करके हम वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं। और अभी जब स्क्रैपिंग पॉलिसी आएगी, तो जो आपको वेस्ट मटेरियल मिलेगा वो बहुत सस्ता मिलेगा, और दुनिया का भी हम ला सकेंगे। मैंने कांडला पोर्ट में, हमारे पास 1 लाख एकड़ जगह थी, और मैंने उस समय कहा था कि वर्ल्ड से जो स्क्रैप है वो भी हमारे देश में आए, क्योंकि वो देश बाकी देशों के लिए समस्या है। और उससे एल्यूमिनियम, कॉपर, सब की कॉस्ट कम होगी, क्योंकि रिसाइकलिंग होगा, और रिसाइकलिंग के कारण कॉस्ट भी कम होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, और बाकी भी बातें जो सरकार कर रही है उससे कॉस्ट कम होगी। और मेरा विश्वास है, अमिताभ कांत जी ने कहा वो बिल्कुल सही है, कि हमें अब ये बस मिस नहीं करनी चाहिए। हम सबको मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के साथ साथ इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल व्हीकल का
इंडिया नंबर 1 का वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब हमको बनाना है, यही हमारा सबके मन का सपना है। और ये कठिन है पर इम्पॉसिबल नहीं है। और इसलिए आज जो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्किल, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल देश की आवश्यकता है। और मैं खुद प्रयोग करता हूँ, मेरी हॉबी है। मैं अभी 400 बसेस डीजल की हमारे कारपोरेशन में मैंने खुद होकर जिद्द के साथ पूरा प्रोजेक्ट पूरा किया। और डीजल बसेस का कन्वर्शन, जो सीवेज वाटर था कारपोरेशन का, वो 180 करोड़ रुपए में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पावर जनरेशन को बेच दिया। अब उस वाटर से 650 टन स्लज निकलती है और फ्रूट, वेजिटेबल, मटन, मच्छी मार्केट की वेस्ट बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन तैयार करके बायो सीएनजी 49 टन पर डे बनाने का कोई प्रोजेक्ट टेंडर करने का आया नहीं, कोई नहीं आया। अब मेरी जिद्द थी कि करना था। मैं आईआईटी के हमारे मित्रों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट लगभग पूरा किया। 80 बसेस कन्वर्ट हो गई और अभी 400 बसेस, 100 कार और 100 ट्रक हम कर रहे हैं। और अभी नेपियर ग्रास से बायो सीएनजी बना रहे हैं। 1 एकड़ में 200 टन नेपियर ग्रास बनता है, 6000 कैलोरिक वैल्यू है, 60% मॉइस्चर में। तो एक किसान को 1 एकड़ में 2 लाख रुपए मिलते हैं, क्योंकि मैं फार्मर हूँ। राइस स्ट्रॉ 5 टन से 1 टन बायो सीएनजी मिलता है। और अभी पुणे में ये एक्सपेरिमेंट मैं हमारे क्षेत्र में 6 डिस्ट्रिक्ट में, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर और वर्धा, 5 साल के अंदर डीजल मुक्त करने वाला हूँ। और ट्रैक्टर, ट्रक, बसेस कन्वर्ट कर रहा हूँ। और मैंने ये प्रोजेक्ट बिल्कुल लिया है क्योंकि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट ये इतनी आवश्यक है जो दिल्ली वालों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी ये हमारा फ्यूचर है। अभी आपको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इथेनॉल के ऊपर की आपकी बाइक भी आप लेके, क्योंकि इलेक्ट्रिक तो है ही, पर मैं फार्मर हूँ। गेहूं को भाव नहीं, चावल को भाव नहीं, शुगर का प्रॉब्लम, सब जगह किसानों की हालत बहुत ख़राब है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डाइवर्सिफाई, एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करें फॉर एनर्जी क्रॉप्स। और इथेनॉल तो अब बहुत है, इथेनॉल की 5000 करोड़ की इकोनॉमी 50,000 करोड़ की बन रही है। तो अब मैं ये कहूँगा कि इसके लिए बहुत बड़ी प्लेस है जो हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, और इसमें इलेक्ट्रिक ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमारे पास कोल सरप्लस है, सोलर पावर हो रही है, पावर सरप्लस है। कितने प्लांट, पावर प्लांट एनसीएलटी में गए हुए हैं, पीपीए नहीं हुआ इसके कारण। तो मुझे लगता है पावर जनरेशन हमारी क्षमता बहुत है, तो हमारा इंपोर्ट बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा और नया एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी खड़ा होगा। तो देश हित में जो बात अमिताभ जी कह रहे थे, मैं कह रहा था, मुझे बहुत खुशी है कि आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया। इसको मार्केट मिलने वाला है। और आपको मैं बताता हूँ कि आपकी पेट्रोल व्हीकल से भी ज़्यादा इसको रिस्पांस मिलेगा। और ऑलरेडी वर्ल्ड मार्केट में आपका अच्छा प्रेजेंस है। मैं केनिया गया था और मैंने वहाँ के लोगों से जब बातचीत की तो आपका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में है, श्रीलंका में आपका अच्छा है। तो ये आप 79 या 80 देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। और इससे एंसिलरी डेवलप होगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ म्हणजे हमारे देश का एयर पोल्यूशन जो है, जो बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान निकलेगा। आपने ज़रूर शुरुआत के समय में आपको लग रहा था कि सरकार इतना तेज़ी से आगे जा रही, फिर उसमें हमने हमारा जो टफ स्टैंड था इंडस्ट्री के सब लोगों के डर के कारण थोड़ा डाइल्यूट भी किया, क्योंकि ये ना हो कि भाई हम लोग इस इंडस्ट्री के अगेंस्ट ऐसा इंप्रेशन नहीं होना चाहिए। अभी भी जो पेट्रोल डीजल बनाना है बनाए, एक्सपोर्ट करना है करें, मार्केट में कोई बैन नहीं है, हम किसी को उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। पर जब बेटर प्रोडक्ट मिलने वाला है तो कंज्यूमर उसका चॉइस करने वाला है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से एक नए युग की शुरुआत ने बजाज के भी इतिहास में, मुझे याद है कि आप जो ट्रांसफॉर्मेशन होते होते गया है वो सब लोगों ने देखा है। आप हमारे विदर्भ एरिया से, वर्धा से ही है, और जो मेरा क्षेत्र है वही है, तो मैं पूरी तरह इस प्रवास को जानता हूँ। और इसलिए आज आपने ये जो किया है, इसके लिए मैं पूरे हमारी सरकार की ओर से आपको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा
क्योंकि जब हम लोग अमिताभ जी और मैं बात करते थे तो हमारे क्रिटिक्स थे, और वो ये कहते थे कि आप जो बात कर रहे हैं ये इतना कठिन है, संभव नहीं है। सरकार में कोई भी चीज़ आउट ऑफ बॉक्स कहना, ये कहने के बाद कन्विंस करना है बहुत कठिन काम होता है। अभी मैंने एक पार्किंग प्लाजा बनाया हमारे ऑफिस में, तो मुझे 1.5 साल 18 NOC लाने के लिए लगे, और अब वो बन गया, कोई अधिकारी तैयार नहीं था। और अब वो ऑटोमेटिक सिस्टम है कि वो गाड़ियाँ ऊपर जाती है 7 मंजिले की, ऊपर में एक रेस्टोरेंट बना। अब कल NHIDCL को 50 काम मिल गए पार्किंग प्लाजा के देश में। अब 3-4 साल में 10,000 काम मिलेंगे। 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी तो उसी की होगी जिसमें सरकार के पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उसमें आएगी। तो मुझे आज खुशी है कि नए टेक्नोलॉजी का जो उपयोग होता है उसका बहुत फ़ायदा होता है, और आज आपने आज जो ये शुरुआत की है इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। और निश्चित रूप से भारत की जनता के लिए भी एक बहुत अच्छी आपकी भेंट है और लोग इसको स्वीकार करेंगे। फिर से एक बार आपने इस मिशन को सक्सेस किया, इसमें आपकी इंजीनियर्स, आपके टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स और विशेष रूप से ज़्यादा पार्ट आपके भारतीय है, और मुझे लगता है कि 100% आप निश्चित रूप से इसमें सक्सेस आपको हासिल होगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, धन्यवाद। Thank you very much, Mr. Gadkari. Truly inspiring words for us. The next item on the agenda is a very special one. We have the new Chetak in front of us. We are also flagging off today the Chetak Electric Yatra. This is a yatra or a journey that will start from New Delhi and make its way to Pune through many cities of Western India. To kick this off, I now request Mr. Rajiv Bajaj, Mr. Gadkari, Mr. Rakesh Sharma, Mr. Piyush Pandey, Mr. Joseph to please proceed to the flag off area. Yeah, Nitin will take you. Some more announcements. All photo journalists, you may also proceed to the flag off area. Everybody else may remain here. We're going to live cast this event on the screen. Once we are done, we'll be back for Q&A with Mr. Bajaj and the senior leadership team. Thank you. So don't forget to come back to this room in about 15 minutes.